Welcome to another video. In this video, we will be talking about P2P transactions on Wazirx. So P2P transactions stands for person to person, and as the name suggests, person to person transaction होता है, बीच में कोई middleman नहीं रहता है. Wazirx बीच में facilitating partner की तरह काम करता है. That's it. So ये P2P transaction का use क्या है? So basically अगर मेरे को एक fiat currency को एक stable currency में convert करना होगा, तो P2P transactions are required on Wazirx. So what are stable currency? Stable currency is nothing but a cryptocurrency whose value is linked or pegged to a asset like a gold maybe, or to a currency like INR or US dollars, and hence the variation is quite less of stable coins. वो इसलिए स्टेबल कहलाता है क्योंकि उसका वेरिएशन बहुत कम रहता है when compared to other cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, जिनमें वेरिएशंस बहुत रहता है. तो ये स्टेबल कॉइन का यूज क्या है? तो स्टेबल कॉइन allows us to conduct some transactions. Like for example, there is something called as STF, which stands for Smart Token Funds. STF पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो मैं जब भी बना दूंगा लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आप देख सको. तो वो STF का ट्रांजैक्शन करने के लिए on Wazirx you need that stable coin which is USDT on Wazirx. USDT stands for basically उसका वैल्यू जो रहता है it is always pegged to $1 and hence stability ज्यादा रहता है. तो now देखते हैं अपन प्रोसेस क्या रहता है to obtain that USDT or that stable coin on Wazirx. So ये P2P प्रोसेस में ब्रीफली समझा देता हूँ. ओके, सो मेरे को स्टेबल कॉइन चाहिए, किसी को वो स्टेबल कॉइन बेचना है. सो ये ट्रांजैक्शन कैसे होएगा? आई विल ट्रांसफर माय फिएट करेंसी विच इन आवर केस इज INR. मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा और वो उसके वॉलेट से वो स्टेबल करेंसी विच इन आवर केस इज USDT इन Wazirx केस वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा. सिंपल इनफ ट्रांजैक्शन. ये ट्रांजैक्शन एक अमाउंट पे डिसाइडेड अपॉन होएगा. सो बेसिकली यहाँ बिडिंग होता है. सो USDT is like a coin, like it's a cryptocurrency coin. So इसका value भी fluctuate होता रहता है. So you have to decide upon the common price at which you want to make the transaction happen. So here you can see the price at which the USDT is currently getting traded at. And here at on the left side order book, you can see the price at which the investors are willing to sell their USDT in exchange for the fiat currency, which again in our case is INR. But इसका minimum amount भी रहता है. So minimum USDT which you need to buy from the sellers is 14.5 USDT. So मैंने अभी cost डाला है 77.38 हमें डालूंगा because that's the price at which it is getting traded at. So 77.38 डालूंगा. ये वैल्यू अपन कुछ भी डाल सकते हैं और ये जब वैल्यू आएगा वो इन्वेस्टर जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ये सेलर, देन द ट्रांजैक्शन विल हैपन. सो पर मैं अभी जल्दी करना है अपने को तो 77.38 डाल दूंगा एंड देन द वॉल्यूम मिनिमम नीड्स टू बी 14.5. इसका वैल्यू 1122 रुपीज आ रहा है, वो मैं बाय कर दूंगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा. नाउ अभी ये सेलर को जाएगा कि आर यू विलिंग टू सेल USDT फॉर दिस प्राइस, and if he agrees upon, transaction हो जाएगा and then the USDT will get deposited into my account. And when this get deposited, then I can carry on the further transactions whichever I want, like buying any cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, कुछ भी ले सकता है. और STF में भी I can invest using USDT. So STF का अगर मैं another video बना रहा हूँ वो लिंक कर दूंगा जब भी बन जाएगा तो. So that's about it. This was pretty straightforward. And if you like the video, subscribe to the channel, spread the word, share it. And if you have any other request, if you want to learn something new, put it in the comment section and let the algorithm know to push this channel further. Thank you.